At 158.7 seconds into the flight time, when the rocket would have reached 147 km altitude, the payload fairing will be separated. In the absence of dense atmosphere at that altitude, the aerodynamic shaping of rocket imparted by payload fairing is no longer essential. The second stage burns out at 239 seconds into flight. Its action time is 115 seconds. The launch vehicle coasts for the next 163 seconds. During this regime, there is no thrust development, but the launch vehicle is steered. At the expense of meager loss of relative velocity, the launch vehicle gains an altitude of 182.5 kilometers. The ignition of third stage, SS3, is scheduled 10 seconds after the SS2 separation. It burns for 109 seconds, during which there is remarkable increase in relative velocity of the launch vehicle. It increases from 3.2 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. And in the post phase of 176.6 seconds follows the action of SS3, while the stage is with the ongoing launch vehicle. SS3 is separated 697.6 seconds into flight. Another 8.5 seconds later, the velocity trimming module plays a crucial role of adding or curtailing velocities as necessary to impart appropriate injection parameters to the primary satellite EOS-08. This is scheduled to take place approximately 13 minutes 29 seconds into flight. Injection of SRO demosat at 476.23 km altitude marks the completion of the mission. In all, the mission is 15 minutes 44 seconds long. इस यान में प्रथम चरण में HTPP पर आधारित ठोस नोदक वाला चरण है, जिसमें कुल 87 टन का ठोस नोदक है, जिसकी मदद से वह 2496 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 94 सेकेंड में 93 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। द्वितीय चरण में ठोस नोदक है फिर से, और इस चरण में कुल 7.7 टन का ठोस नोदक है। इसके साथ वह 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। यह चरण 116 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने है एक कर्टेन रेजर वीडियो SSLV-D3 का। One prime chain actuation in progress. Over the years, there has been a significant global shift in demand for small satellite launches. There is a growing need for a constellation of Earth observation and communication satellites at a lower cost. Small satellites have the potential to transform society by bringing the benefits of space technology to even the remotest of places. The numerous advantages of small satellites will make them a game changer in the space industry. To cater to this need, ISRO has developed a quick turnaround launch vehicle called the Small Satellite Launch Vehicle SSLV to launch single or multiple nano, micro and mini satellites up to 500 kilograms to the planar low Earth orbit. SSLV is a 3-stage vehicle with all solid propulsion stages and liquid propulsion based velocity trimming module as terminal stage. It is 2 meters in diameter and a height of 34 meters with lift-off mass of 120 tons. The third mission of SSLV-D3 is set to launch with EOS-08 as the primary satellite, developed by ISRO, and SR-0 Demosat as a co-passenger satellite developed by Space Kids India. The satellites will be positioned in a 475-kilometer circular orbit. The primary satellite, EOS-08, is a microsatellite built on an IMS-1 bus platform, and the mass of the satellite is around 175 kilograms. The primary objectives of the EOS-8 satellite are to create payload instruments compatible with the microsatellite bus and to incorporate
new satellite-related mainframe technologies required for future micro-operational satellites. The satellite is equipped with 3 payloads: the Earth Observation Infrared Payload (EOIR), and the Global Navigation Satellite System Reflectometry Payload (GNSSR), and Silicon Carbide Ultraviolet Dosimeter. The data from the satellite will be used for disaster monitoring, fire detection, volcanic activity observation, industrial and power plant disaster monitoring, cryosphere studies over the Himalayan region, and flood detection. The Silicon Carbide Ultraviolet Dosimeter is designed to monitor the UV irradiance at the viewport of the crew module in the Gaganyaan mission. The mission life of the satellite is expected to be 1 year. SSLV is poised to revolutionize the global space commercial market, catering to the launch of small, mini, micro, and nano satellites. And it allows the launch of multiple satellites into multiple orbits with minimal infrastructure requirements. This accomplishment will undoubtedly bolster the Indian space ecosystem on the global stage. जी हाँ, अभी आपने देखा संक्षिप्त विवरण SSLV-D3 EOS-8 मिशन का। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक बार फिर दोहरा देते हैं। SSLV प्रमोचन यान की विश्वसनीयता एक बार और सिद्ध की जाएगी इस प्रमोचन द्वारा। माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत निर्भर उपकरणों का विकास तथा उनका तकनीकी प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भावी प्रचालनशील उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का प्रदर्शन करना, जिसमें एकीकृत एवियोनिक पैकेज, एम्बेडेड पीसीबी व बैटरी के साथ संरचनात्मक पैनल, लचीले सौर पैनल और ड्यूअल जिम्बल एंटीना जैसी नई प्रौद्योगिकियों को माइक्रोसैट में समायोजित करना भी शामिल है। अब हम उड़ान से 2 मिनट 40 सेकंड की दूरी पर। The year 2024 began as the New Year's Day dawned with the successful launch of PSLV-C58 ExpoSat mission. Aditya L1 spacecraft, the maiden mission of ISRO to observe Sun, has been successfully placed in the designated 3-dimensional halo orbit of the Sun-Earth Lagrange's point L1 on 6th of January. On 17th February, INSAT 3DS was injected by successful launch of GSLV F-14. With the third consecutive success of reusable launch vehicle landing experiment on 23rd June, landing experiment series are complete. On 22nd of July, ISRO conducted flight experiment for demonstration of air-breathing propulsion technology through the launch of RH-560 sounding rocket from SDSE Shar. Today we are gearing for the SSLV-D3 EOS-08 mission from SDSE Shar. We are about 1 minute 30 seconds from the launch. अब हम लगभग 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं उड़ान से। प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा T0 पर। यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है। इस मिशन के पूर्ण परिपथ की ट्रैकिंग के लिए रडार स्टेशन में शार, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर और यत्रगा स्थित रडार स्टेशन इस पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और हम तक वास्तविक समय पर यान की सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे प्रज्वलन। -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV-D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Shato is in main auto. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை சுமந்தபடி SSLV-D3 ராக்கெட்டானது விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் மதியழகன். அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் மதியழகன், என்னென்ன பயன்பாடுகளுக்காக இந்த ராக்கெட்டானது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது? விவரங்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம். இஸ்ரோவினுடைய புவி கண்காணிப்பு, அதாவது புவி கண்காணிப்பு செயல்பாடுகளுக்காக 175.5 கிலோ எடை கொண்ட அதிநவீன EOS-08 என்னும் செயற்கைக்கோள் இஸ்ரோவால் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த செயற்கைக்கோள் சிறிய ரக SSLV-D3 ராக்கெட் மூலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து தற்பொழுது விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. வெற்றிகரமாக இந்த SSLV-D3 விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. இந்த ராக்கெட் என்பது முக்கியமாக புவி கண்காணிப்பு செயல்பாடுகளுக்காக தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ராக்கெட் 3 நிலைகளை கொண்டிருக்கிறது. அனைத்துமே திட எரிபொருள். அந்த ராக்கெட்டுக்கான எரிபொருள் என்பது திட வகையை சேர்ந்ததாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்த ராக்கெட் என்பது 475 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் குறைந்த புவி வட்ட சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. தற்பொழுது ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெற்றிகரமாக, அதாவது புறப்பட்ட நிமிடத்திலிருந்து 13வது நிமிடத்தில் 475 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. இந்த ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு முக்கிய கருவிகள், ஆய்வு பணிகளுக்கான கருவிகள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த கருவிகள் அனைத்துமே ஓராண்டிற்கு மட்டுமே செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் இந்த செயற்கைக்கோள் பூமியை 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதன் மூலம் பேரிடர் கண்காணிப்பு, சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு, தீ விபத்து ஏற்படுவது குறித்து கண்டறிதல் போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு இந்த செயற்கைக்கோள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से Action completed. संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है। अब SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS2 S3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. The second stage, SS2 has completed its operation, but presently still with the ongoing rocket and combined coasting is in progress. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। Plus 5 minutes.
SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजिशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। மதி தற்போது இந்த புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளானது ராக்கெட்டானது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இதோட செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம். இஸ்ரோ இன்று ஏவி இருக்கக்கூடியது என்பது SSLV ராக்கெட்டாக தான் இருக்கிறது. இதனுடைய உயரத்தை பொறுத்தவரை 34 மீட்டர் உயரம், 2 மீட்டர் அகலம், 120 டன் எடையும் கொண்டது. சுமார் 10 முதல் 500 கிலோ வரை எடை கொண்ட செயற்கைக்கோளை புவியில் இருந்து 500 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை புவியினுடைய தாழ்வட்ட பாதைக்கு எடுத்து செல்லும் திறன் தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இன்று இந்த SSLV ராக்கெட்டுடன் செலுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய EOS-08 என்கிற இந்த செயற்கைக்கோளினுடைய எடை 175.5 கிலோவாக தான் இருக்கிறது. இந்த EOS செயற்கைக்கோளினுடைய பணிகளை பொறுத்தவரை பேரிடர் காலங்களில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுவது, காலநிலை மாற்றம் குறித்தான கண்காணிப்பு, அதே போல காட்டுத்தீ ஏற்படும் பொழுது அது தொடர்பான கண்காணிப்பு, எரிமலை வெடிப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை கண்காணிப்பது போன்ற பணிகளையும், அதே போல கடலில் வீசும் காற்றின் வேகம் மற்றும் மண்ணில் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றையும் மட்டுமல்லாமல் இமயமலை தொடர்களில் பொழியும் அந்த பனிப்பொழிவு ஆகியவற்றினுடைய அந்த தரவுகளையும் இந்த செயற்கைக்கோள் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த வகை செயற்கைக்கோளை பொறுத்த வரைக்கும் இது மிகவும் ஒரு சிறிய அளவிலான செயற்கைக்கோளாகவே கருதப்படுகிறது. இந்த செயற்கைக்கோள் ஏற்கனவே 3 முறை ஏவப்பட்டு சோதிக்கப்பட்ட நிலையில் 2 முறை வெற்றியும் அதில் ஒரு முறை அந்த வெற்றி வாய்ப்பு நழுவி போன நிலையில் தற்பொழுது மீண்டும் ஏவப்பட்டு இருக்கிறது. SSLV அதாவது PSLVக்கு மாற்றாக இந்த முறை SSLV முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டு இந்த செயற்கைக்கோளானது தற்பொழுது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் இந்த செயற்கைக்கோளானது புவிவட்ட பாதையில், அதாவது ஏவப்பட்டதிலிருந்து 475 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. During the 110 seconds of operation, the stage carries the rocket to 475 kilometers altitude, imparting 7.2 kilometers per second velocity. Third stage performance normal. Whatever velocity and attitude remains to be added or curtailed is done by liquid propellant based velocity trimming module. Nominal thrust for third stage motor is 160 kilonewtons. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए यान अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे जब SS3 उद्दिष्ट कक्षा में यान को ले जाएगा। Stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद SS3 की कोस्टिंग फेज शुरू हो गई है। Vehicle performance normal. The next coasting phase is currently operational. Let me just apprise the viewers in the meantime about the spacecraft. EOS-08 is an Earth observation satellite built on ISRO's microsat IMS-1 bus. Images in the mid-wave and long-wave IR bands acquired by electro-optical infrared payload during day and night will be useful for applications like satellite-based surveillance, disaster monitoring, environmental monitoring, volcanic activities, fire detection, and industrial and power plant disasters. Global navigation satellite system-based reflectometry payload
aids in remote Plus 10 sensing to minutes. derive applications like ocean surface winds, soil moisture, cryosphere applications over Himalayan regions, flood detection, inland water body detection, etc. While India is preparing to send its first human mission to space in an indigenously developed crew module as a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS-08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of crew module. The satellite EOS-08 is significant also for a host of new technologies that will be demonstrated. Communication, baseband, storage and satellite positioning functions have been integrated into a single package using commercial off-the-shelf components. Its multifunctional structural panel having embedded battery and power electronics cards enables mass and volume savings. RFS package consists of LNAs, S-band and X-band filters, switches and solid-state power amplifier. Micro dual gimbal antenna, flexible solar panel, pyrolytic graphite sheet diffuser, plate and miniaturized phased array antenna are among the noteworthy new technologies. SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। ट्रिमिंग मॉड्यूल इग्नाइटेड। आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तृतीय स्टेज का पृथकन और यह अंत में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है जिसे 12 मिनट्स उपग्रह को उचित अभिवृद्धि प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है यान अब उचित उपग्रह को अंतक्षेपित करने की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं। The velocity trimming module had worked for a minimal time to acquire the injection parameters for the primary satellite separation, and there is a confirmation that the orientation and the altitude are appropriate for the satellite separation. We are awaiting eagerly anytime now the separation of EOS-08. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS-8 को कुछ ही समय पर उद्देश्य कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। EOS-08 satellite separated. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS-8 को सफलतापूर्वक 475 किलोमीटर की सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite EOS-08 has been injected into the 475 kilometer altitude. अब इस श्रृंखला में अगली गतिविधि होगी SR0 डेमोसैट सैटेलाइट का अंतक्षेपण। Next event in the mission is the separation of the passenger payload SRO demosat. इस मिशन के पूरा हो जाने के पश्चात अंतिम तंत्र जो कि VTM है उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा
इससे अंतरिक्ष में अनैच्छिक व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए यह एक इसरो की जिम्मेदार पहल है। कुछ ही सेकंड्स में अब हम देखेंगे SR0 डेमोसेट उपग्रह का अंतक्षेपण। ऊंचाई 475 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड। SR0 satellite separated. और सबके लिए हर्ष का पल यहाँ पर रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है। SR0 डेमोसेट पृथक होकर Passenger payload also has been deployed. But mission is continuing for VTM passivation. VTM passivation takes place in the non-visibility period approximately 420.217 second to 5367 second. VTM passivation status will be updated in the second orbit from Trivandrum Telemetry Station approximately 5963 seconds. All the stations involved in operation shall continue with operations. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. The EOS-08 satellite as well as the SR-0 satellite has been injected into the required orbit. This SSLV-D3 EOS-08 mission has been accomplished. यहाँ इसके साथ SSLV-D3 EOS-8 मिशन सफलता को प्राप्त करता है। आप सभी दर्शकों के लिए आपका दिन मंगलमय हो। The third and final developmental flight of SSLV is successfully accomplished. SSLV, another arrow in ISRO's arsenal. We take leave from you. Up next is the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath and the mission executives. Thank you. Mission Director. Spacecraft Director also. Avinash. So good morning all of you. As you have already seen, the third development flight of SSLV-D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS-08 satellite as well as SR-0 satellite also has been injected after the maneuvers. And congratulations to the SSLV-D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. And for us, the payload on this mission was EOS-08 satellite, which all of you are aware. It is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the the VTM stage, and all that will be completed in due course of time. So congratulations once again for the entire team who worked behind the scene to develop this SSLV rocket. The
and its culmination of development program. Let us give a big round of applause to the entire team. I hand over now to the Mission Director, Sri Vinod. Good morning to all. Good morning, ISRO. Good morning, India. Today we have achieved a major milestone in the journey of SSLV. The last and final development flight of SSLV-D3 has been successfully accomplished. With that, we are moving into the operational phase. Today, we have precisely injected the EOS-08 satellite and also the passenger payload SR-0 into the precise orbit. The efforts put in by one and all has resulted in this achievement. Let me take this opportunity to thank the people who were behind this, especially the management who had the confidence and trust in us to hand over the development of the new launch vehicle to a team, a new team, which was able to achieve the targeted launch of D1, D2 and D3 in the specified time frame. Especially we thank the management led by our beloved chairman, Dr. Somnath, who has been part and parcel of this SSLV and also has been behind us in realizing the system. During the realization of D3 system, the confidence for going ahead with the activities have been given by our review team. The confidence given by the flight readiness review team, the mission readiness review team, and also the eminent expert review team has given us enough confidence to go ahead with the realization of the system without much non-conformances and achieving this. Tremendous effort has been put by all the ISRO centers, people working in all the ISRO centers, and their dedication and the passion has resulted in this today's achievement. The URSC team led by Avinash has realized a satellite which is having very new technologies incorporated in this and also advanced payload from SAC. I thank them for achieving this and also realizing a satellite in a very short time frame. Let me thank my team, the small satellite core project team, ably marshaled by the vehicle director, Sri Edil Arasu. So I thank him for the support he has given during this time, and also to the entire core team, which has toiled day and night to achieve this. Now that the development phase of SSLV is over, the next phase of the ISRO's workhorse, the next workhorse will commence soon. We are definite that there will be many more launches of SSLV soon, and we will meet at that time. Thank you and Jai Hind. Thank you. I take this opportunity once again. Those who are behind me, you are not able to see all of them in the cameras, are the young team who have been working in the last few years to develop the SSLV. Congratulations to once again. And all the people who have been supporting this program all across the centers. All people are not here on the stage, and also the industries who have taken the responsibility to manufacture all the rocket parts and systems, and who will possibly be taking up this task of realizing it in numbers in the future. So congratulations to all of you once again. And now over to the spacecraft director, Avinash. Good morning. Respected Chairman Sir, Center Directors, my senior colleagues, my teammates and friends. First of all, to begin with, I would like to thank the SSLV team for precisely placing the spacecraft in intended orbit. And I am happy that solar panels are deployed and power is being generated. EOS-08 is a very unique spacecraft where we have many new technologies, including flexible solar panels, integrated avionics, embedded multifunctional structural panels. These are to name a few. We have more than 20 new technologies which we are demonstrating through EOS-08. And we have three very new payloads. One is the infrared payload, UIR from SAC, which will give us the imaging capability in day and night, and also help us in disaster management, etc.
And we have a new type of remote sensing, that is GNSS-R reflectometry. This again uses the GNSS signals to bring out the remote sensing data products in areas like soil moisture and ocean wind monitoring, etc. And we also have a UV dosimeter, which is to be flown on a Gaganyaan mission, but we are flying it here to get the on-orbit experience. So these payloads will have applications which will not only change or influence the common man, but will also help the astronauts on Gaganyaan. So with so many new technologies in such a short time, we are able to realize this because of the support and guidance from all our management team and the real efforts put in by the Microsat 2C or EOS 08 team. So I would take this opportunity to thank our Center Director Sankaran sir for guiding us throughout the program, and I also thank the total EOS 08 team, starting from subsystems, the whole URSC center and different centers, LPSC, IASU, SAC, LEOS have contributed different systems, and we have come out with a good spacecraft. And at the end, this is possible only because of our families taking up our responsibilities at home when we are dedicating our time in the office. So I also thank personally to family members of all my teammates and my family as well for being with us in this crucial last 1 year period. And also my core project team who have put total efforts to realize this. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you, Avinash. This satellite also have 3 important payloads as told by him. The infrared imaging payload, the GNSS reflectometry payload, as well as the dosimeters. And the first 2 were developed by Space Application Center, Ahmedabad, and the dosimeter payload was developed at a laboratory for electro-optic systems. So congratulations to all of them for those developments, and I hope all the very best to the satellite EOS 08. And we have today with us all the directors of the centers and the leaderships that you have reviewed and cleared this rocket. So I'm not moving over to them for comments at this moment. So are all seen to you. Congratulations to you once again, and thank you all the very best. And till we meet for the next launch, bye from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Thank you.